Hello and welcome to Vision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials, and like every day we'll start our session with our motivational line. Let us see what is our motivational line for today. Our motivational line for today is you have to believe in yourself when no one else does. So what is the meaning of this motivational line? This motivational line is very important for all of us. Why? We need to keep this in mind that we have to believe in ourselves, when no one else does. So there can be times in your life when no one else believes you. So in that case, in that time, in that moment, in that situation, you will have to believe yourself. Maybe others will not believe you, others are not going to believe you. Then only option is to believe in yourself. So you are the one who should believe in yourself. We ourselves should believe ourselves, right? We should believe ourselves. No one else can, maybe no one else will, but we should believe ourselves, right? So let us see what is our first vocabulary word for today. Our first vocabulary word for today is pragmatism. So what is the meaning of pragmatism? Pragmatism is a noun. Pragmatism, in Hindi you can say Vyavaharvad. Okay, Vyavaharvad, you can say that is pragmatism. In English you can say the quality of dealing with a problem in a sensible way rather than following fixed theories. Right, so the quality of dealing with a problem in a sensible way. That means you have a quality to deal with a problem in a sensible way. So, right, and rather than following fixed theories. So you are not following fixed theories, you are dealing with a problem in a sensible manner, right? With a great sense, you are dealing with a problem. You are not following theories that are fixed. You are not following those ideas which are fixed, with rules which are fixed. You are not following those. You are following your own rules. That's pragmatism. Synonyms can be prudence, expediency, practicality. These can be the synonyms. Antonyms can be idealism, impracticality, timidity. These can be the antonyms. How can you use it in a sentence? Detectives often practice pragmatism on a case by using common sense and cause and effect techniques to determine who is a suspect. So detectives, so you know there are detectives who detect cases. There are CID cases. So in that case, they practice pragmatism. The detectives practice pragmatism. With pragmatism, what did they do? What do they do? They use this method, right, by using common sense and cause and effect techniques. So they use cause and effect techniques to determine who is a suspect. So who is the suspect? They try to determine this with pragmatism. Let us see our next vocab. Our next vocab is bolster. Bolster is a verb जिसका meaning हिंदी में होता है आधार या तो सहारा. So in English you can say to make something stronger or bolder. So you are making something stronger or you are making something bolder. That is called bolster. Synonyms can be strengthen, support, reinforce, boost. These can be the synonyms. Antonyms can be undermine. Okay, so how to use it in a sentence? Raising your voice is not a good way to bolster your position during an argument. So if you want, if in an argument you want to raise your position, or you want to increase your position, right? You want to strengthen your position. You should not raise your voice. So raising your voice in an argument is something that is insulting. So you should not raise your voice. Maybe your argument should be that strong to increase your position or to stay in your position, right? Let us see our next word. Our next word is abet. Abet is a verb which means in Hindi uksana, or in English you can say encourage or assist someone to do something wrong. So you are encouraging someone to do something wrong, which is not right, right? That is called abet. And the noun form is abatement. It's a verb. Abet here, it's a verb. इसका noun form होता है abatement. Synonyms के हो सकते हैं foment, incite, instigate, provoke. These can be the synonyms. Antonyms can be constrain, restrain, allay, soothe. ये सारे इसके antonyms हो सकते हैं. Sentence में कैसे use करें? The grandmother was arrested for trying to abet her grandson, a prison escapee. So here in this case, the grandmother was arrested
The grandmother was arrested for trying to abet her grandson, a prison escapee. So यहाँ ये जो grandson है ये एक prison escapee है. So इनके grandmother ने क्या किया, ग्रैंडमदर को अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज शी ट्राइड टू अबेट हर ग्रैंडसन हु वाज अ प्रिजन एस्केपी. तो ये जो ग्रैंडसन है ये जेल से भाग के आए थे. हाँ, तो इसको ग्रैंडमदर क्या कर रहे थे, इसको ग्रैंडमदर अबेट करने की कोशिश कर रहे थे. दैट मीन्स शी वॉज ट्राइंग टू इंस्टिगेट और प्रोवोक, इसको थोड़ा उकसाने की कोशिश कर रहे थे. दैट इज वाई द ग्रैंडमदर वॉज अरेस्टेड. Our next vocabulary word is bucolic, or you can pronounce it as bucolic or bucolic. Bucolic is an adjective जिसका meaning होता है हिंदी में ग्राम्य. Okay, that means a village kind of environment or nature. In English you can say relating to the pleasant aspects of the countryside and country life. This is bucolic. Synonyms can be rustic, rural, pastoral, country. These can be the synonyms. Antonyms can be urban. How to use it in a sentence? Even though I was born in the city, I still prefer quite of a small bucolic village any day. तो मैं एक सिटी में बॉर्न हुआ था, मेरा जन्म हुआ था सिटी में, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ bucolic village any day. So I prefer bucolic village. That means I prefer village kind of an atmosphere, village kind of environment. I prefer that. Okay, so this is our first idiomatic expression for today. What is our first idiomatic expression? It is dead wood. So what is the meaning of dead wood? Dead wood means people or things which are no longer useful or necessary. तो ऐसे कोई इंसान या ऐसे कोई चीज़ जो कि और नेसेसरी नहीं है, मतलब आपके काम नहीं आने वाला, विच इज़ नॉट यूजफुल, यू डोंट नीड दिस एनी मोर, राइट? सो यूजफुल और नेसेसरी, यू डोंट नीड दिस एनी मोर, दैट इज कॉल्ड डेड वुड. How to use it in a sentence? The company bought in a lot of new computers. They no longer want the dead woods. तो कंपनी ने बहुत से न्यू कंप्यूटर्स मंगाए हैं, खरीदे हैं, तो पुराने कंप्यूटर्स की उनकी और ज़रूरत नहीं है. सो दे no longer want the dead woods, right? Let us see what is our next vocabulary word. Our next word is enfeeblement. Enfeeblement is a noun जिसका meaning होता है दुर्बलीकरण. Okay? In English you can say a gradual sinking and wasting away of mind or body. So you are going down. Okay? So you are not high in your energy. You are low in your energy. That is called enfeeblement. Synonyms इसके हो सकते हैं decaying, decline, degeneration, descent. These can be the synonyms. Antonyms can be comeback, improvement, rally, recovery. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? He was now over 50 and his sight showed serious symptoms of enfeeblement. तो अभी इनका उम्र जो है, अभी इनका एज जो है वो अबव 50, ओवर 50 है, मतलब 50 से ज़्यादा है. उनके साइट से, मतलब उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत से सिम्टम्स है एनफीबलमेंट के, मतलब वो बहुत दुर्बल हो चुके हैं. देर आर साइंस दैट देर आर सिम्टम्स विच शोज दैट ही इज़ वेरी वीक. राइट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज कमेंस. Commence is a verb जिसका meaning होता है आरंभ. Okay, so to start something, that is called commence. In English you can say to start an event or a work. So you are starting any event, you are starting any work, that is called to commence a work or commence an event. Synonyms इसके हो सकते हैं began, inaugurate, start, launch, arise. These can be the synonyms. Antonyms can be close, end, finish, conclude, complete. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? The Saturday workshop will commence exactly at 8:30 a.m. and end at 4:50 p.m. sharp. तो सैटरडे का जो वर्कशॉप है वो कमेंस होगा, मतलब वो स्टार्ट होगा एग्जैक्टली सुबह 8:30 बजे एंड एंड एट 4:30 p.m. शार्प. सो 4:30 शाम को 4:30 बजे शार्प ख़त्म होगा एंड इट विल कमेंस स्टार्ट एट 8:30 a.m. in the morning. Our next vocab is slammed. Slammed is a verb जिसका meaning होता है हिंदी में कटु आलोचना करना. So you are discussing something which is not right. So in English you can say shut or criticize forcefully or loudly. तो किसी के बारे में कुछ खराब बातें बोलना, that is criticize somebody. To criticize somebody, that is called slammed. Synonyms इसके हो सकते हैं smash, slap, criticize, beat, knock, strike. These can be the synonyms. Antonyms can be praise, aid, assist, open. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? The little girl accidentally slammed her hand in the door, crushing her fingers under its weight. तो एक छोटी सी बच्ची ने accidentally, मतलब अचानक क्या किया,
शी स्लैम्ड हर हैंड इन द डोर, मतलब उसका जो हाथ है वो दरवाजे के पीछे आ गया था, बीच में आ गया था, एंड द फिंगर्स, हर फिंगर्स क्रश्ड अंडर इट्स वेट, दैट इज कॉल्ड स्लैम्ड हर हैंड. Okay, let us see our next word. Okay, so we have our next idiomatic expression. What is it? The next idiomatic expression we have is get the axe. So what is the meaning of get the axe? It means lose the job. So you have lost the job, that is called get the axe. Okay, how to use it in a sentence? The project's team was undergoing a major restructuring. Recruitment executives were the first to get the axe. So this is the meaning. So प्रोजेक्ट टीम जो था यहाँ पे वो अंडरगो हो रहा था, मतलब वो एक प्रोसेस से जा रहा था, वो मेजर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से वो जा रहा था. दैट मीन्स मेजर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस वाज गोइंग ऑन इन दिस प्रोजेक्ट टीम. इसके लिए क्या हुआ? रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव्स वर द फर्स्ट टू गेट द एक्स. तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव्स जो थे वो सबसे पहले बाहर हो गए, मतलब रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव्स का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? सो दे वर द फर्स्ट टू गेट द एक्स, दैट मीन्स इनको सबसे पहले जॉब से निकाला गया. आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज फियरी. फियरी इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग हिंदी में होता है उग्र. इन इंग्लिश यू कैन से कंसिस्टिंग ऑफ फायर और बर्निंग स्ट्रांगली एंड ब्राइटली. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं बर्निंग, ब्लेजिंग, दिस कैन बी द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स कैन बी bland or indifferent. How to use it in a sentence? The depressed teenager said that he wanted to die in a fiery explosion that would blow up his school. तो ये जो डिप्रेस्ड एक टीनेजर थे, दैट मीन्स देयर वाज मे बी अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल हु वाज अ टीनेजर हु वाज गोइंग थ्रू हिज टीनेज. मे बी he or she is 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maybe she is a teenager. So said that he wanted, okay, so it's a boy, he wanted to die in a fiery explosion. वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मरना चाहता है, जो बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसके स्कूल में और उसके स्कूल को भी ब्लास्ट कर देगा, राइट? सो मे बी ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम विद द स्कूल, तो वो उसके स्कूल को ब्लास्ट करना चाहता है और उसमें वो खुद भी मर जाना चाहता है, राइट? आवर नेक्स्ट vocab इज एचिंग. So what is the meaning of etching? Etching is a noun जिसका meaning होता है नक्काशी, और you can say a print produced by the process of etching. So basically etching is a process where we see different kinds of prints. Okay, different kinds of prints. In synonyms इसके हो सकते हैं engraving और print. Antonyms हो सकते हैं erase, expunge, obliterate, ये सारे हो सकते हैं इसके opposite words. How to use it in a sentence? There are 3 types of patterns formed by acid etching. तो एसिड एचिंग मतलब एसिड से जो डिज़ाइन बनाया जाता है वहाँ पे 3 तरह के पैटर्न बनाए जाते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एचिंग. आवर लास्ट वोकैबुलरी वर्ड फॉर टुडे इज एक्सियोमैटिक. एक्सियोमैटिक इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है सिद्ध. ओके, इन हिंदी सिद्ध करना, और इन इंग्लिश यू कैन से एविडेंट विदाउट प्रूफ और आर्ग्यूमेंट. मतलब ऐसा कोई चीज़ जो कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसको लेकर कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करता है, सब मानते हैं इसको कि ये है, ओके, लेकिन इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, इसका कोई कारण भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है इसको लेकर. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अंडरस्टूड, गिवन, ग्रांटेड, सेल्फ एविडेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं मिसअंडरस्टूड, अनसर्टेन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें? देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज रिगार्डेड एज एक्सियोमेटिक दैट द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. तो एक समय ऐसा था जब हम लोग मानते थे कि इट वॉज रिगार्डेड एज एक्सियोमेटिक. मतलब इसको एक्सियोमेटिक क्यों माना जाता था? क्योंकि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के चारों तरफ सन रिवॉल्व्स, वो घूमता रहता है. ये प्रूफ नहीं हुआ था, इसका कोई प्रूफ नहीं था दैट दिस इज द ट्रूथ. ओके, सो देयर वॉज अ टाइम जब ये एक्सियोमैटिक था, मतलब इसको माना जाता था लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था, राइट? So we have our last idiomatic expression for today. What is it? It's plum job. So what is the meaning of plum job? It means desirable position which is well paid and considered relatively easy. तो ऐसा एक desirable position मतलब ऐसा एक position जो सबको चाहिए, which is well paid, जहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा सैलरी मिलता है, considerably relatively easy, लेकिन काम भी बहुत कम है.
How to use it in a sentence? This looks like a plum job, but it has its own bunch of complications. ये दिखता है कि ये एक plum job है, लेकिन इसके अंदर अपने ही complications हैं, इसके अपने complications हैं, मतलब इसके अंदर अपने ही जटिलता है, right? ये दिखता है plum job, लेकिन है बहुत जटिल, right? So this is our top 10 vocabulary words for today and 3 idiomatic expressions. I hope you like the session. If you like this session, do like our video, do like the video and comment on it if you have any queries, any questions relating to this video. See you next day, and till then, take care. Goodbye.